Hello friends, welcome back to the series of lecture. I am Advocate Gaurav Singh Adana. This is the 46th lecture of this series of CRPC. So we are continuing with the topic arrest. So in this topic, first of all, we would see what are the types of arrest. But in the process of types, we would see when a person could be arrested and when cannot be. So that would be covered in 41(1)(b), etc. Along with that. So along with this topic, you have to study the DK Basu judgment. DK Basu judgment having two parts. One part is about the safeguards, and another part is of compensation in the custodial death. Then in this topic, we would see what are the safeguards in the during the arrest of the judicial magistrate, and what are the recommendation that was done for the arrest by the law commission. So let's start with section 41 first. So in this section, who can arrest, when can arrest, that all is given. Along with that, guidelines are also provided in this. Basically, there are 4 points in this section. First one is when can a police officer arrest without a warrant. दूसरा, when can a police officer arrest in a non-cognizable case. Third one is when can a private person arrest. And third one is when can a judicial or executive magistrate can arrest. Now, executive magistrate or judicial magistrate, it is given in section 44. Private person is in section 43. Non-cognizable cases में police officer can arrest is section 42. And police officer could arrest without warrant, that it is given in section 41. So first of all, we would discuss section 41. It is written, any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person. First one is who commits in the presence of a police officer a cognizable offense. अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऑफेंस करता है तो. अब ऐसा भी तो हो सकता है that person has committed cognizable offense earlier. It is alleged that he has committed the cognizable offense earlier. Can the police officer arrest that person also? The answer is that yes. In that case also, a police officer could arrest without warrant. If the person commit the offense in front of the police officer, and that offense is cognizable, then the per se police officer could arrest him. But when the accused has done the cognizable offense earlier, then also he could arrest the person. But for that, guidelines are given, that is in clause B. See clause B, against whom a reasonable complaint has been made or credible information. Reasonable complaint must be reasonable, or credible information. Information must be credible, has been received, or a reasonable suspicion must be reasonable, exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied. So now what they are talking about is, पहला जो था हमारा, first one was that he has committed a cognizable offense in presence of a police officer. That is first one. Second one is that there is a reasonable complaint or credible information, etc., or a reasonable suspicion that he has committed a cognizable offense earlier, पहले कभी उसने cognizable offense किया है, and that offense is punishable with how much, less than or 7 years or extend to 7 years, with or without fine. So offense should be punishable with less than 7 years or extend to 7 years, with or without fine. In such a case, they are saying that you can arrest that person without warrant, but if the following conditions are satisfied.
You see, these are less grave offenses. पार्लियामेंट ने जो क्राइटेरिया चुन लिया है 7 years का, पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन था, दे मे चूज द 5 years also, 4 years, 3 years, 10 years also. But as per the parliamentary wisdom, they had chosen the 7 years criteria. So if the police officer want to arrest a person for such an offense, then there are certain conditions which are to be fulfilled. A police officer has to be record reasons. What could be those reasons? अब ये छोटे ऑफेंसेस है, छोटे ऑफेंसेस में गिरफ्तार करना नहीं चाहिए पुलिस ऑफिसर को, लेकिन अगर गिरफ्तार करता है तो उसको कारण लिखना पड़ेगा। तो उसमें पुलिस ऑफिसर क्या कारण लिखेगा कॉमन सेंस से, जैसे कि वो भाग जाएगा, he would abscond, he would create the hindrance in the investigation, he will threaten the witnesses, he will influence the witnesses, और he may repeat the crime. अगर इस तरह के ग्राउंड नहीं, reasonable grounds, then you could arrest. So on such kind of reasonable tangible grounds, accused could be arrested, otherwise not. So those grounds you will find here. See, first one, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. Means what? सबसे पहला requirement है that the police officer should be satisfied that there is a prima facie case against the accused. जब तक prima facie case नहीं होगा, why should he arrest? Why should a police officer arrest the accused? तो सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को कि एक्यूज के खिलाफ prima facie केस है. There is a reasonable suspicion, reasonable complaint, credible information on the basis of which he has committed the offense. Reading it again, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. उसके बाद grounds, अगर prima facie case है, then उसके बाद these grounds has to be seen. अगर prima facie case नहीं है तो grounds देखने की जरूरत ही नहीं है. The police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense. Second is, for the proper investigation of the offense, you need the accused, the police officer need the accused for the interrogation. The crime is of such a nature that the interrogation of the accused is required. अब मान लीजिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 accused हैं. अब 3 में से किसी की पुलिस कस्टडी दे दी मजिस्ट्रेट ने फॉर 2 days, किसी की 3 days, किसी की 5 days, अलग अलग भी दे सकती है या फिर एक साथ भी दे सकती है. अब उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर ने इंट्रोगेशन किया, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे अलग अलग, और फिर उसके बाद उन सबको एक साथ सामने बैठाकर उनके स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कराए कि तुमने तो ये बोला था, तुमने ये बोला था और तुमने ये बोला था. फिर उनका आंसर क्या आता है तीनों का सामने बैठकर, देन उसको भी लिखेंगे. और फिर हालांकि उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है क्योंकि पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट है, बट एटलीस्ट द पुलिस ऑफिसर को टेल to the court that the accused are making false statements. So for the proper investigation and interrogation purpose, police officer could require the accused to get arrested. पुलिस ऑफिसर के पास ये भी पावर होती है कि भाई 160 में स्टेटमेंट्स लिखकर छोड़ दिया जाए, बट अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इट इज नेसेसरी दैट ही शुड बी अरेस्ट, देन द पुलिस ऑफिसर वुड अरेस्ट. टू prevent such a person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. The other ground is to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. To prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer.
इसलिए अरेस्ट कर सकता है जिससे कि वो किसी विटनेस को इंड्यूस ना कर सके या डिसवेड ना कर सके. So to prevent the inducement of witnesses, accused would be arrested. As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. Means what? He will abscond. So यही grounds तो हमने bail में पढ़े थे. Why does the court refuse the bail? Due to these reasons only. Why does the police officer arrest? Because of these reasons only. So the same reasons which already knew now by this amendment. Which amendments? 2009. The amendment in 2009. Now they have introduced the same things directly and expressly in the Beer Act. Otherwise, earlier also the law was same. And what was the authority of that? The authority is D.K. Basu judgment. क्योंकि ये बहुत पहले का है. But earlier what the police officer do as a matter of routine in any cognizable offense, the police officer as a matter of routine arrest the accused. जैसे theft का लगा, theft is a cognizable offense, as a matter of routine police officer would arrest. अब अगर theft के लिए arrest करना पुलिस ऑफिसर को, then the police officer has to record reasons. And reasons are not simply कि ये वाला उठाया और छाप दिया कागज में and भेज दिया मजिस्ट्रेट के सामने. The police officer has to be write down the justified reasons. Means there should be some ground on which the police officer believes that, example, like he is a history cheater, accused is a history cheater, पहले भी the accused was arrested and absconded for some offense, there are chances that he will abscond. In the locality he does not have anything as a estate, उसका लोकेलिटी में ना तो परिवार है, ना बिजनेस है, ना घर बार है, और वो एब्सकॉन्ड हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं. सो सच काइंड ऑफ ग्राउंड शुड बी देयर. विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो 7 साल से नीचे वाले छोटे ऑफेंसेस में अगर अरेस्ट करता है पुलिस ऑफिसर, देन ही हैज टू रिकॉर्ड दीज रीजंस. एंड व्हेन द पुलिस ऑफिसर इज टॉकिंग अबाउट द रीजंस, recording of reason, there has to be explanation about the reasons. It is not as simple as that police officer just put this sentence, any of the sentence, and put that and arrest. He has to explain why he believes it. Because ये जो ऊपर लिखा है ना, reasonable complaint, credible information and reasonable suspicion, all that. It is not just written, it must mean. So police officer has to write why he believes that he would threaten the witnesses. He has to write why he needed the accused for the investigation purpose. So that reason has to be recorded. So अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि he would do the or commit any offense if he said to be free, then he has to write why he believes that he would commit any offense when he would be set free. So the police officer could not be mechanical, simply record the reason. पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्डिंग का ग्राउंड समझाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिखी. मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर गया, अरेस्ट किया और कोर्ट में क्वेश्चन उठ जाए, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को आंसर देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों बिलीव हुआ कि इसको अरेस्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हो सकता है इलीगल डिटेंशन का अगर मुकदमा कर दिया किसी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, देन ही शुड prove it in the court that why he believe. So in the documents the police officer must write, जो अरेस्ट मेमो बनेगा उसके साथ आता है एक और कागज लगाना पड़ेगा, और उसमें अरेस्ट मेमो के अंदर ही लिखना पड़ेगा that for so and so reasons the offense is punishable with 7 years or less, and for so and so reasons I would believe that he would abscond or any other ground which he believes, because of that reasons, on which reasons he believes that, he has to explain in it. Now how many police officers are following it or not, that cannot be said, but what is it written in the judgment that I had told you. And the police officer shall record while making such arrest his reasons in writing. तो ये reasons police officer को लिखने पड़ेंगे, provided that this is also put by the amendment 2010, provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest.
अब दिस वन इज मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज अरेस्ट करो तब भी रीजन लिखो और अरेस्ट ना करो तब भी रीजन लिखो। अब इसका एक कारण है जो अमेंडमेंट आया 2010 में, क्योंकि जो 2009 में रीजंस की बात हुई तो उसमें पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज को अरेस्ट करना बंद कर दिया। अब जो अरेस्ट करना था वो इस वजह से रीजंस के चक्कर में बंद नहीं किया। पुलिस ऑफिसर पे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन है 7 साल या उससे नीचे तो एक्यूज को अरेस्ट नहीं करता। क्यों? सो दिस मेक ए लूप होल एंड ही स्टार्टेड मेकिंग, पुलिस ऑफिसर स्टार्टेड मेकिंग मनी बाय दैट। चलो तुमको गिरफ्तार नहीं करूंगा किसी केस में, एक्यूज से बोल दिया इतने पहुंचा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर several other reasons. So to prevent that misuse, now they had put by the amendment, अगर नहीं करोगे गिरफ्तार then write the reasons for that also. Means नहीं करेंगे तब भी रीजन लिखो और करेंगे तब भी रीजन लिखो। So otherwise the police officer struck up, दोनों तरफ से कानून का शिकंजा। Now the police officer could not play. This one is about what 7 years or less punishable offenses. अब now 7 years से ज़्यादा punishable offenses के लिए then we have to go in the next clause, that is BA. Clause BA, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense. अब here they are not writing that the police officer has to record the reasons for the arrest. अब reasons पे जो reasons record करना पड़ेगा ये that has to be recorded only in the cases where the offense is punishable with less than 7 years or 7 years. 7 years से ज़्यादा punishable offense के लिए reasons लिखने की ज़रूरत नहीं है। But remember this that 7 years से ज़्यादा punishable है, then there also, मान लीजिए एक offense है punishable with 10 years. Is it essential that the police officer would arrest the accused in that case? It depends. If accused is ready to go, ready to cooperate, but as a matter of routine the police officer would arrest. Otherwise तो ये हो जाएगा police officer is biased. नहीं गिरफ्तार करने पर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी आवाज उठ सकती है। लेकिन थ्योरी ये कहता है हमारा मर्डर और रेप केसेस में भी अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज सीआरपीसी नोवेयर मेक्स इट मैंडेटरी टू अरेस्ट। सीआरपीसी सिंपली सेज दैट द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट। शुरू में ही लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट मे अरेस्ट। मीन्स पुलिस ऑफिसर शैल अरेस्ट ये नहीं लिखा हुआ। अगर इसी प्रकार से अगर थ्योरी में देखते हैं तो मर्डर और रेप केसेस में भी एक्यूज को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। इफ़ ही इज़ विलिंग टू कोऑपरेट, अगर वो थाने में आके बयान देने को तैयार है। इफ़ ही विलिंग टू गिव ऑल द स्टेटमेंट्स व्हाट द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्स बाय हिम, इफ़ ही इज़ विलिंग टू गेट इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस। इन अदर ऑफ द केसेस द पुलिस इज नॉट मैंडेटरी to arrest, but in very grave offenses, murder, rape, waging wars, sedition, etc., all, unless the police officer would not arrest, how would the police officer would interrogate? But in the grave offenses the police officer arrest, because if the police officer not arrest, he is roaming in the society, he is danger to the society. But when we go simply for the theory, the offense is punishable with the 7 years से ज़्यादा, that does not means as a matter of routine the police officer arrest the accused in all cases. कुछ offenses ऐसे हैं that is not grave but then also it is punishable with 10 years. ऐसे केसेस में अरेस्ट करना जरूरी नहीं होगा अगर accused कोऑपरेट करने को तैयार है, अगर accused इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ? आपके ऑर्डर पर, पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पर 160 पर एग्जामिन करने को तैयार है। अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहता है कि वो आपको कोई जगह दिखाए तो वो जगह दिखाने के लिए भी तैयार है। सो इफ द एक्यूज्ड इज कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अरेस्ट हिम इन ऑल केसेस। सो राइट डाउन some points on that. For offenses punishable
with less than or equal to 7 years, the accused may be arrested by the police officer, but only with recorded reasons. However, for the offences which are punishable with more than 7 years, the police officer can arrest, but reasons are need not to be recorded. In such cases, also it is not mandatory to arrest the person, as the CRPC nowhere uses the word shall in the matter of arrest. Thus, even for offence punishable with more than 7 years, the police officer may not arrest the accused if the accused participates and cooperates in the investigation. So, the offence punishable with more than 7 years, if the accused participate and cooperate in that investigation, police officer may not arrest the accused. Now let's see CD etc. That is not very difficult. So make a list. Simply have a list. कब कब अरेस्ट कर सकते हैं इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस. अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं. उसमें कितना पनिशमेंट है ये सारी चीज़ नहीं देखेंगे. अगर पहले किया था कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस और अभी पुलिस ऑफिसर के सामने है, उसमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन 7 साल या उससे नीचे और 7 साल से ज़्यादा उसका डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड. दैट इज़ ऑफ रिकॉर्डिंग रीजन एक्सेट्रा. और उसके अलावा देयर आर सो मेनी सिचुएशन विच ऑल्सो अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी डन. क्लॉज सी, who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the state government. Proclaimed offender is defined under section 82 of the CRPC. अगर एक व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको कोई भी गिरफ्तार कर सकता है. पुलिस ऑफिसर ऑल्सो विदाउट वारंट कैन अरेस्ट. In whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such property. अब या तो accused ने चोरी की है या फिर the accused has received the stolen property. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रात में कोई व्यक्ति कहीं घूम रहा है और वो उसके हाथ में एक बैग है. उसके बैग में पुलिस ऑफिसर ने उसको रोक लिया उस बैग को देखकर, और उसमें 25-30 मोबाइल एक साथ निकले, और वो मोबाइल भी इस कंडीशन में भाई सील पैक वगैरह नहीं है, ऐसा लगे ना कि भाई कहीं से खरीद कर लाए हुए हैं या फिर कोई सेलर वगैरह है. तो उधर पुलिस ऑफिसर क्या इन्फ्रेंस निकालेगा उस कंडीशन में? तो पुलिस ऑफिसर यही इन्फ्रेंस निकालेगा दैट दीज फोन्स आर ऑफ स्टोलन, वो चोरी के फ़ोन है, बिकॉज दे आर ओल्ड मोबाइल्स, वो खुले हुए उस तरीके के पुराने मोबाइल्स हैं. सो अब यहाँ पर on suspicion it may be either theft का offense that accused has committed or he has received stolen property 411 IPC. So either the case may be theft or receiving the stolen property, the police officer could arrest in that suspicion. अब उस व्यक्ति ने किया है नहीं किया है that would be proven later on, but since the police officer is having suspicion he can arrest the accused. Next one, who obstruct a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody. Suppose police officer want to arrest someone and you are obstructing him from arresting that person. जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि बड़ा नेता है या फिर बड़ा गुंडा, उसको बचाने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को. और यू आर इन द accused in the custody of the police officer and you escaped from the custody में था accused और भाग गया. So ऐसे व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर कहीं पे भी अरेस्ट कर सकता है. देखो यहाँ पर कहीं पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लिखा है. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी, ऑब्स्ट्रैक्टिंग द पुलिस ऑफिसर ऑन हिज ड्यूटी और एस्केपिंग फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, कहीं पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लिखा है. दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब किस बात के लिए एक्यूज कस्टडी में था? सपोज नॉन कॉग्निजेबल के लिए पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू हो गया. सपोज फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर गिवन ए वारंट टू अरेस्ट ए पर्सन. नॉन कॉग्निजेबल में वारंट तो इशू हो सकता है. नाउ दिस पुलिस ऑफिसर हैज अरेस्टेड दैट पर्सन एंड ही इज टेकिंग हिम टू द मजिस्ट्रेट
On the way this person runs away. Can any other person arrest him per se? Or will he say that no, I have committed a non-cognizable offense without warrant, you cannot arrest? That was at the first instance. But once when you are in custody and then you run away, once you are in custody, then you run away, then this clause comes in, and then warrants are now required, and any police officer can arrest the accused because the accused escaped from the custody. Now, clause 5F. Who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the Union? What is the meaning of deserter? कई बार अगर आर्मी कोई व्यक्ति आर्मी छोड़ता है और रिटायर्ड वगैरह लेता है, अर्ली रिटायरमेंट वगैरह, तब तो ठीक है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वगैरह लेता है तब तो ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप रिटायरमेंट लेते हैं और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया बट उसका डेट अभी आया नहीं है, मीन्स एज नहीं हुआ है, पीरियड अभी लैप्स नहीं हुआ है, आर्मी से छुट्टी लेके गए, वो व्यक्ति आर्मी से छुट्टी लेके गया और छुट्टी के बाद वहीं सेटल हो गया, मान लो जहाँ भी गए सेटल हो गए, वहाँ पे नौकरी कर ली और छुप कर रह रहे हैं, मीन्स दैट पर्सन हैज लेफ्ट द आर्मी और द एयर फोर्स और नेवी विदाउट फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज। जब भी एक्यूज या सॉरी हियर इन दिस, जब भी कोई आर्मी में जॉब छोड़ता है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने पड़ते हैं, एंड ही हैज टू पे द अमाउंट दैट इज रीजनेबल अमाउंट, the reasonable amount he has to pay because the armed forces has spent money on his training etc. but अगर अर्ली प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और वो है, then he could leave but otherwise he has to pay the money. अब ये आर्म फोर्सेस वगैरह में से आप सोच रहे होंगे क्यों भागते हैं लोग भाग, तो उसमें सच काइंड ऑफ अगर कोई टॉर्चर करते थे ऑफिसर्स वगैरह, जो पहले किया जाता था, अब तो नहीं है ऐसा, उनको एब्यूजिव लैंग्वेज बोलना और ऐसे सारी चीज़, बहुत गंदी गंदी गाली देना, भद्दी गालियाँ देना, उनको टॉर्चर करना, उनसे ऐसे कार्य कराना जो उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं, जिसके लिए वो गए नहीं है, ऑल दिस थिंग व्हाट हैपेंड अर्लियर बट नॉट नाउ डेज। तो ऐसी वारदात भागने की अब होती भी नहीं है। नाउ डेज द आर्म्ड फोर्सेज आर वेरी रेप्यूटेटेड। So deserter means any person who left the army without intimating them, without the permission. Any police officer is authorized to arrest them. G. Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made. Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offense. मान लीजिए एक इंडियन है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके मर्डर कर देता है एंड कम्स बैक टू इंडिया। नाउ इफ ही हैड बीन कमिटेड दैट मर्डर इन इंडिया, would it be punishable in IPC? Yes, it is punishable in IPC. सपोज एक व्यक्ति कहीं दुबई गया मान लो और दुबई में चोरी करके आ गया, अब दुबई में जो सज़ा होगी मान लीजिए हाथ काटने की है, तो वहाँ से वो बचकर भाग गया है उसको। Now when he came back to India, whether it is offense in India, yes, he would be liable for extradition. अगर इंडिया की और अदर कंट्री की जहाँ पे ऑफेंस हुआ उसकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, और इवन इफ देयर इज नो ट्रीटी, अगर ट्रीटी नहीं भी है, अगर ट्रीटी नहीं भी है तब भी हम दे देते हैं ऑफेंडर को। अगर ट्रीटी है या नहीं भी है, इफ द पर्सन इज एक्स्ट्राडेटेड फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री, बिकॉज इंडिया का जो एक्स्ट्राडिशन लॉ कहता है कि विदाउट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑल्सो हम किसी व्यक्ति को अदर कंट्री के हवाले कर सकते हैं। सो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो या ना हो, इफ ए पर्सन इज लायबल टू एक्स्ट्राडाइटर, देन इन दैट केस एनी पुलिस ऑफिसर कुड अरेस्ट दैट एक्यूज इन इंडिया। सो अगर एक्स्ट्राडाइट करना है किसी व्यक्ति को, एक्यूज को, तो एक्स्ट्राडाइट करने के लिए उसको पहले अरेस्ट करेंगे तभी तो एक्स्ट्राडाइट करेंगे। सो इन दैट केस एनी पुलिस ऑफिसर कुड अरेस्ट हिम irrespective of the nature of the offense। उसने बाहर
अगर कोई भी ऑफेंस किया है, एनी नेचर ऑफ ऑफेंस, if he India is liable for extradition, then he will be arrested by any police officer without warrant. So read again. Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise या तो कोई लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन है या फिर नहीं भी है तो भी for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India, जिसके लिए उसको इंडिया में अप्रीहेंड या डिटेन किया जा सकता था irrespective of the nature of the offense. तो उसने बाहर कोई भी ऑफेंस किया हो irrespective of the nature of the offense, he could be arrested and detained by any police officer without warrant. Who Clause H. Who, being a released convict, commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356. अब 356 एक बार पढ़ लेना. I would tell you the summary. अगर कोई एक व्यक्ति convicted रहा और जेल में रहा है, the person is convicted and he remained in jail, और अब उसकी punishment over हो गई. So उसकी पनिशमेंट होने के बाद उस कन्विक्ट को क्या कहा जाएगा? रिलीज कन्विक्ट. नाउ द रिलीज कन्विक्ट हैज टू अंडर 356 क्लाउज 5 ऑफ द CRPC द कन्विक्ट रिलीज कन्विक्ट हैज टू furnish his address as to where he would reside after coming out of the jail. Now if the accused changes the address tomorrow, अगर वो 6 महीने के बाद एड्रेस बदल लेता अपना, he will again have to notify to the concerned officers that I have changed my address. जो भी released convict होगा means जो punish हो चुका है, so that released convict whenever he come out of the jail, he keep informing the proper authorities about his address wherever he resides, and wherever he changes the address that he has to inform the authorities again. If he omits to inform the authorities, रिलीज कन्विक्ट है लेकिन 356(5) में पहली बार तो मान लो उसने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद एड्रेस चेंज कर लिया और इन्फॉर्म नहीं किया उसने, उस ग्राउंड पर उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है. सो इन दैट केस ही वुड बी लायबल टू बी अरेस्ट बाय एनी पुलिस ऑफिसर एनीवेयर. दैट इज व्हाट क्लॉज H says. Clause I. For whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. So you see what they are saying here is, मान लो मुखर्जी नगर पुलिस ऑफिसर को किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है और मान लो वो व्यक्ति रहता है समवेयर इन अदर स्टेट, लाइक नागपुर में रहता है, महाराष्ट्र में. उस व्यक्ति ने क्राइम किया है मुखर्जी नगर में और अब वो नागपुर चला गया है. मान लीजिए मुखर्जी नगर में किसी ने ऑफेंस किया, वो अदर स्टेट में चला गया, मान लीजिए उदयपुर चला गया राजस्थान में, या फिर नागपुर चला गया महाराष्ट्र में. सो वन मेथड ऑफ अरेस्ट इज दैट, जो पुलिस ऑफिसर है मुखर्जी नगर का, वो जाकर उसको हिमसेल्फ में गो एंड अरेस्ट, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो. अगर नॉन कॉग्निजेबल है, ही वुड ऑब्टेन द अरेस्ट वारंट एंड देन गो एंड अरेस्ट हिम. बट द अदर मेथड ऑफ अरेस्टिंग इज दैट ही मे सेंड अ रिक्विजिशन. रिक्विजिशन मीन्स ए रिक्वेस्ट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन. कंसर्न पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में वो व्यक्ति है, आप उस पुलिस स्टेशन को रिक्विजिशन भेजो, वो पुलिस ऑफिसर भेजे, दैट फॉर सो एंड सो ऑफेंस दिस पर्सन नीड्स टू बी गेट अरेस्टेड. द पुलिस ऑफिसर देयर ही वुड अरेस्ट दैट पर्सन एंड आफ्टर दैट पर्सन ऑब्वियसली टेकन बैक टू दिल्ली, मुखर्जी नगर. तो इस सेक्शन में जो ये कह रहे हैं कि
ये जो पुलिस ऑफिसर इस पुलिस स्टेशन में है वो भी इसको किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है अगर उसको रिक्वेजिशन मिला है, एंड दैट रिक्वेजिशन स्पेसिफाइज द ऑफेंस upon which the arrest to be made, and also specifies clearly the person who has to be arrested, and also the police officer at Udaipur should examine that if this Mukherjee Nagar police station wanted police officer wanted, so जो उदयपुर वाला पुलिस ऑफिसर है he would examine that मुखर्जी नगर वाला पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता था। अगर कर सकता था ये वाला पुलिस ऑफिसर, then this police officer could also arrest without warrant. So that is what they are writing in this clause. That is what they are writing here, that if this police officer who has sent the requisition, if he so desire, if this police officer who sent the requisition, if he so desire, was he competent to arrest that person? If yes, the answer is yes, then this police officer could also arrest. So read it once again. For whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or the other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. अगर मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन वाला अगर पुलिस ऑफिसर रिक्वेजिशन अरेस्ट कर सकता था, तो जिसको उसने रिक्वेजिशन भेजा है वो भी अरेस्ट कर सकता है। सो अगर सारे पॉइंट्स हम देखें, व्हाट आर द वेरियस सिचुएशंस? वन इज वेयर द cognizable offense committed in presence. Another is where cognizable offense is committed in absence. अब इसमें लेस देन 7 years और इक्वल टू 7 years वाला सिचुएशन, एंड मोर देन 7 years वाला सिचुएशन। उसके बाद फिर इफ एनीवन इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और डिजर्टर फ्रॉम ए आर्मी, या फिर उसके बाद स्टोलन प्रॉपर्टी हो, सस्पिशन है उसके स्टोलन प्रॉपर्टी का या फिर रिसीव करने का, या फिर उसने पुलिस ऑफिसर के लॉफुल फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन किया हो। अब उसी में एक था ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, उसके अलावा एक्स्ट्राडिशन वाला एग्जांपल, देन रिलीज्ड कन्विक्ट, दैट इज 356 क्लॉज 5, देन रेक्विजिशन। सो मेक लिस्ट ऑफ ऑल दैट, कुछ लिख दिए कुछ और लिख लेना जो बताएं, कुछ रह गए उसको बना लेना। सो इन दिस केस द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट। लेकिन जो रीजंस लिखने वाली बात है ना, वो खाली इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, और इसमें भी खाली इस वाले केस में लेस देन और इक्वल टू 7 years, इस वाले केस में। In all other cases, the police officer is having right to arrest without warrant. Second clause, subject to the provisions of section 42, no person concerned in a non-cognizable offence, or against whom a complaint has been made, or credible information has been received, or reasonable suspicion exists of having so concerned, shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate. So it is quite understandable. It means cognizable offences में तो arrest कर सकते हैं, but in non-cognizable they are saying without the warrant you cannot arrest a person. If a person is concerned in a non-cognizable offence, then he could not be arrested without warrant. So that's it for this section and for this lecture also. इसके बाद next lecture में 42, 43, 44 and by that all these section 41, 42, 43 and 44 the types of arrest जो टॉपिक है हमारा वो ओवर हो जाएगा। सो क्वेश्चन आता है इसमें बिहार में काफ़ी पूछते हैं, इन व्हाट केसेस द पुलिस ऑफिसर कुड अरेस्ट विदाउट वारंट। सो इन दैट क्वेश्चन द होल 41 हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड, और जो 41 का क्लॉज 1B है वो भी समझाना पड़ेगा। और ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट, इन दैट तो 44 की समरी लिखनी पड़ेगी।
या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ अरेस्ट, देन all these four has to be written 41, 42, 43, 44. So it could be asked in any form, anything. So it is a very important question for theoretical questions asked in UP, Bihar, all that states MP. So that's it for this lecture. Next lecture we would continue section 42. Thank you for watching lecture.